बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा क़यास है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से जिल्द की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की तशख़ीस और इलाज से वाबस्ता हूँ। आज के दिन हमारा मोटो है कि हम बॉडी फंगस के ऊपर बात करें, जिसको उर्फ़े आम में धद्री का नाम दिया जाता है। तो मेरे ऐसे पेशेंट्स और कोलीग्स और मेरे ऐसे जानने वाले जो धद्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि धद्री जो है ये एक अछूत का मर्ज़ है। इससे मुराद मेरी ये है कि अगर एक इंसान को आपके घर में धद्री का मर्ज़ लाहक है तो वो दूसरे लोगों को इससे इन्फेक्ट कर सकता है। इससे ये भी मुराद है कि अगर आपके आसपास में या आप घर के बाहर किसी जगह पर जाते हैं जहाँ गैदरिंग है, बहुत सारे लोगों का हजूम है और वहाँ पे अगर किसी को धद्री लगी हुई है या उसकी स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप भी उसे एक्वायर कर सकते हैं। ये मर्ज़ आपको भी लाहक हो सकता है। क्योंकि ये एक अछूत का मर्ज़ है, इससे बहुत ज़्यादा लोग एक वक्त में मुतासिर हो सकते हैं और सम टाइम्स पूरी की पूरी फैमिलीज़ में ये मर्ज़ पाया जाता है। किसी एक इंसान को ठीक करने से या किसी एक पेशेंट के अपना इलाज करा लेने से पूरे घर से धद्री की वबा ख़त्म नहीं होती। तो धद्री की वबा को घर से ख़त्म करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि घर के तमाम अफराद एक वक्त में अपना इलाज कराएं और सब लोगों की धद्री एक वक्त में ठीक हो। तो हमने हाल ही में एडको डर्मेटोलॉजी के ताउन से एक जूम सेशन भी किया, जिसमें हमने अपने डॉक्टर कोलीग्स के साथ धद्री यानी टीनिया की मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम को डिस्कस किया, उनकी मैनेजमेंट के बारे में बात की। फॉर जनरल पब्लिक और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, इस किस्म का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। वी आर गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो। और फॉर माय जूनियर कोलीग्स एज वेल, जो कि अभी डर्मेटोलॉजी में सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द डॉक्टर्स बिलोंगिंग टू अदर डिसिप्लिन्स लाइक गायनेकोलॉजी, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स नॉट ओनली कम टू डर्मेटोलॉजिस्ट बट ऑल्सो टू द गायनेकोलॉजिस्ट विद दीज प्रॉब्लम्स विद द बॉडी फंगस और विच वी कॉल टीनिया। सो आप लोगों के लिए ये बहुत जान लेना ज़रूरी है कि धद्री को किसी भी आम किस्म की ट्यूब या कोई दवाई, लोशन या ऑइंटमेंट लगा लेने से आप अक्सर औक़ात ठीक नहीं कर पाते, और वो धद्री जो आपके जिस्म के बेशतर हिस्सों को इन्फेक्ट कर चुकी है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा के ओरल ट्रीटमेंट लेना लाजमी होगा। ओरल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि आपको कुछ गोलियां, कैप्सूल्स या खाने वाली कुछ दवाएं लेनी पड़ेंगी और वो तजवीज़ करवा के कम से कम 2 या 3 हफ्ते का कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी धद्री बिगड़ती रहेगी, वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी अशकाल बदल बदल के आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर अटैक करती रहेगी और इसी असना में आपके घर के दूसरे तमाम अफराद को भी मुतासिर कर सकेगी। आज की वीडियो को ज़रा गौर से देखिए, और फॉर माई डॉक्टर कोलीग्स देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो रिगार्डिंग हाउ डू वी ट्रीट multiple kinds of tinea, how do we diagnose, what could be the doses in children, and what should be the doses of antifungals in adults. So we formally begin with our session today. Or first of all, I would like to thank Adco Dermatology for taking up this decision and bringing up dermatologists and gynecologists all together on one platform, so that we could learn from each other. And since the topic of interest is common to both disciplines, that is gynecology and dermatology, because it is a fungal skin infection which is seen by both the specialities, so I felt it really very prudent and very fruitful to both of us. Let's formally begin. I am Dr. Aisha Ghiyas, and just as you people are told, I'm working as assistant professor, and in addition to the aesthetic parts, I am qualified, and I feel privileged in being asked to talk on the fungal infections and other dermatological problems, which are very common in our society. So, fungal infections, as you all know, they are very common, and they can present anywhere on the skin. So today we will be very specific in learning about some things. One by one, I'll let you know. And the first learning objective today would be to identify the risk factors of superficial dermatophyte or fungal infections. So first of all, we are going to learn about the risk factor, who in the population is more at risk of having these infections. Secondly, we are going to evaluate recalcitrant infections, which are becoming very common. As a dermatologist, I know that in my practice,
every 10 to 20% of the fungal infections are coming that are recalcitrant to treatment. That means they are coming time and again for treatment, and even after good courses of antifungals, their fungus is not going away. So this would be our second learning objective, and the third learning objective would be to recognize the normal patterns of infection on the skin. Superficial fungal infections, we call them superficial because they infect only the upper part of the skin, which is the epidermis. They are not meant to go inside into the dermis. Once they go inside into the dermis and the subcutaneous tissue, they are no more called superficial, then they qualify for being called the deep fungal infections. The clinical scenarios, investigations, treatments, and everything belonging to deep fungal infections is not in the domain today. So we'll be limiting our talk to the superficial fungal infections, which are found in the epidermis. It has got a very high prevalence, especially in the warm, humid climates after the rainy seasons, usually. And what are the major sites involved? So the attacker is predominantly looking for your skin and nails and hair. On the extreme left side is the clinical picture of the nail fungus, which is obviously looking very brittle, discolored. And the center is the fungal infection involving the scalp hair. And on the extreme right side, this is how this gentleman looks. That is the fungus. How does it look? So skin and mucosa, nail and scalp, these are the basic sites involved by the fungal infections. Very high prevalence, as I told you, after the rainy seasons. And these are the people at risk of having fungal infections. So whenever you encounter patients having any medical problems like diabetes, asthma, tuberculosis, or they are in the extremes of ages, also in the middle age group, they belong to socioeconomic group which is not prudent a lot about their personal hygiene, who are having chronic respiratory diseases. Why did we include people with chronic respiratory diseases, asthma and diabetes in particular? Because one thing is that they have naturally low immunity, so the fungus is more likely to infect these people. And secondly, in asthma and chronic respiratory diseases and other problems, patients are given very often some doses of corticosteroids or other drugs that are immunosuppressant. So the chances of acquiring fungus are increased even more. So this is a very beautiful picture to be kept in mind when you are encountering a patient with fungus. And per se, literally, we divide them into either dermatophyte or non-dermatophyte infection. So this is very important because in clinical practice, you come across the ringworms, and when you try treating the ringworms, the patient doesn't respond. So then you think, what was it actually? It seemed purely like a fungal infection, like a ringworm, but when I treated, the patient didn't respond. Patient comes back with the same problem. It could be a non-dermatophyte infection. By pure fungal infection, we mean a dermatophyte infection. And if the clinically the picture is same, but the patient doesn't respond, you should think that it could be a non-dermatophyte. The treatment of non-dermatophyte infections is altogether different. So, talking about the superficial fungal infections, and in that category, dermatophyte, which is a commonest thing to see in the clinic, it can involve many body areas, and similarly, it is named differently. Like as when it affects the body area, the trunk, especially, it is called the tinea corporis, and when it is involving the inguinal areas, it may extend onto the abdomen, may extend downwards to the thighs, but predominantly when it involves the genital area, including the inguinal area, it is called tinea cruris. If it involves the interdigital space in the feet and may also extend onto the under surface or on the upper surface, it is called tinea pedis. And similarly, when it involves the scalp, it is called tinea capitis. There is one more category. It is called onychomycosis.
So this is not called tinea unguum. It may be called tinea unguum when it involves the skin of the finger, but when predominantly it infects the nail of the finger, it is called onychomycosis. By onycho we mean nail, and mycosis is obviously for the fungus. It is basically a misnomer. By mycosis literally means a cancer, but this is not a cancer, it's a fungus. So it is a misnomer in dermatology. Onychomycosis could be of the fingernails or it could be of the toenails. The treatment varies in the duration. So if you have a fingernail infection, your treatment might be good if you give it for 6 weeks or so. But for the toenail infections, you might have to give treatment for at least 3 months or even more. Who is the sibling of tinea? So tinea is not alone. Tinea has a sibling, and this sibling is called Candida. Candida per se is a very different organism. It is not like a dermatophyte. It is a non-dermatophyte and it's a yeast. By yeast, I mean that the cells are present singularly and the single cells are attached to each other making pseudo-hyphae. So they are not true hyphae. By true hyphae, I mean that there is a stalk and it is divided by septi into many cells. And this is true for the tinea. But in case of Candida, the cells are unicellular, they are present singularly, but when they join each other, they may make pseudohyphae. There are more than 400 types, but we are concerned with only few types, say 4 to 5, that are really bothering us. And amongst the candidal infections, it may involve the underarms, it may involve the infra-breast area, which is called infra-mammary area, groin area. See, whenever there is a fold, whenever the two skin surfaces are coming in close contact to each other, there is maceration, there is sweating, and there is growth of the fungus. And it may involve the nails as well. So when it involves the nails, the Candida has a different clinical picture. I'll just explain in the coming slides. And in the diaper area, Candida is also very common, for which everybody is, diagnosing the pediatric age group as contact dermatitis or a diaper dermatitis and treating with hydrozole or equazole, which contains steroids. And when the Candida is there, Candida, it flares up with the treatment of steroids, and then the doctor is in trouble. So you must consider that if a patient in pediatric age group comes with diaper dermatitis, you need to consider Candida amongst the differentials. We have so many sampling techniques to get the Candida identified in lab, but these are usually not employed because it is a spot diagnosis, and in clinic you get very much used to diagnosing tinea, and I'm sure many of you would be quite good at it. So these are not actually employed, but there are the tools. What are the clinical features in common skin infections? So talking first of the tinea corporis, which is the commonest type, and you might see such round and annular and serpiginous border lesions. They are joining each other and making geographical shapes. And in the center, you may find scaling, and the peripheries are elevated. The borders may have a little bit of vesiculation. But the important part pertaining to diagnosis is the presence of scales and the symptom of itching. These two things, in addition to the spot picture of annular lesions or rounded lesions, qualifies for diagnosis of tinea. And what is the treatment? As you all know, terbinafine is the treatment of choice in tinea. And if the patient does not have any other comorbid conditions, a treatment of 2 to 3 weeks would be enough. Again, you have to calculate the dose of terbinafine based on the weight of the patient and also on certain other factors we'll talk shortly. Going towards tinea cruris is a very common type, especially those who have long working hours. They are sitting like for many hours. Sports people who have sweating and who are not particular about their personal hygiene. And because this is an area which really needs a better hygiene to get rid of fungus if it is there. So tinea cruris can be there in the genital area, may extend onto the abdomen. So the critical picture, clinical picture would be the same, that is scaling in the center and the periphery
would be a very clear-cut border. This clear-cut border is not sometimes seen, not because it is not tinea, but because it is partially treated. By partially treated, I mean that the tinea could be treated either by a doctor with specific antifungal treatment, or it could be treated by a non-doctor or a quack or by relatives and neighbors and medical storekeepers, whatever, but they are treated with the steroids. We'll talk shortly on the tinea incognito, which is the variety of tinea that is, shape, it changes the shape because of being treated with steroids. Again, the treatment is terbinafine. So Turbiderm can be given either in the solution form or in the cream form, 1 to 2 to 3 times per day. And oral terbinafine can also be given. In the adults, we usually give 250 milligrams per day. But then again, this is not a clear cut, you know, principle, and we may even increase the dose. We can increase the dose in those who are not particular about taking their treatment, and those who tend to miss their doses, or who have are obese and having body weights that require a larger doses. And in the pediatric age group, we usually tend to give smaller doses. We are not talking of the pediatric age group yet, but if the patient belongs to age between 13 and 20, you may give 250 milligram per day depending on weight. And if the patient is belonging to low body weight, then 125 milligram per day would suffice. And 14 days of treatment is mandatory. However, you may increase the treatment duration by 1 or 2 weeks. One thing which I might forget later, you need to consider getting liver function tests done if you are planning to increase the duration beyond 2 weeks. Many of our people in the public are co-infected with hepatitis C virus. They may have diabetes, they may have fatty liver, or they may have many other medical conditions that lead to deranged liver function tests. As terbinafine has an excretion through liver, we need to see the liver function test. And if you are planning higher doses or longer durations, you need to take into account the condition of the liver by doing the LFTs done. This is another type of tinea, which is called tinea pedis, that is infection of the feet, very common, especially in those who are in the habit of wearing shoes for longer durations, and who do not usually wear open shoes, and the skin is under surface of the feet is macerated, the skin is getting peeled off. You may see here there is desquamation, exfoliation, but on the upper picture, as you see, there is a clear cut border. This clear cut border, whenever is there, you should pinpoint the diagnosis at tinea, and there is no such thing as eczema. The other differential in most of the cases of tinea is an eczema, but the diagnostic point again is the periphery, is the border of tinea, which is very clearly demarcated in almost all cases. Treatment again is terbinafine for 2 to 3 weeks, and adult dose is 250 milligram per day. However, you may increase the dose. Coming on to tinea capitis, which is a very common thing to see in pediatric age group, but yet you may see in the adult age group if they are immunocompromised, or if the infecting source was quite nearby, the bolus was very much, and they got infected maybe from some of the family members. So the appearance of tinea capitis would be that it is usually seen in the form of a ring-like infection, maybe extending onto the forehead. But if it is not extending onto forehead, then you may find the scales and a little bit of hair loss inside the scalp. I still remember a case in my clinic in Mayo Hospital. This is a little off the subject, but I would like to quote it here. There was a female who came with partial hair loss, and everybody was like, she might have an alopecia, she might have SLE, she might be suffering from malnutrition and things like that. But looking at the texture of hair in that area, and partial hair loss, and the broken hair, and at her malnutrition like status, we had something in our mind that it could be tinea. And we have the facility of lab testing in Mayo Hospital, so we got it tested, and it came out to be tinea capitis, though the patient was belonging to adult age group. So it is not quite uncommon to see tinea capitis involving the adult age group. You should know, and you may encounter such patients. Again, the treatment is terbinafine, but remember,
Whenever tinea involves scalp or hair shafts, you need to give a long-term treatment. Minimum dose, minimum duration of the treatment could be 1 month, and you may even increase. If the liver function tests are normal, patient is tolerating the treatment well, you may even increase the dose, or you may consider pulse therapy. If you cannot give treatment for more than 1 month, you may consider a pulse therapy of terbinafine even. So tinea capitis in a child in the pediatric age group, it is very much common. See, this is there is a hair loss. Whenever there is patchy hair loss because of any other condition, you do not tend to find scaling. But in tinea capitis, you may find scaling. Rather, you do find scaling. There are 3 to 4 types of tinea capitis from the dermatological point of view, but आपके लिए जो ज़्यादा important है वो ये देखना है कि जहाँ पे बाल गायब हैं वहाँ पे और क्या है, like वहाँ पे ग्रे स्केलिंग है, वहाँ पे ब्लैक डॉट्स हैं या नहीं है, वहाँ पे कोई बॉगी स्वेलिंग है या नहीं है, और वहाँ पे हेयर लॉस है या नहीं है. अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो टेक माय वर्ड्स, यू आर डीलिंग विद अ केस ऑफ tinea capitis. You need to give antifungals for good 1 month and reassess, and maybe you have to continue for a couple of months. In the children in a pediatric age group, usually we tend to calculate the dose depending upon weight. So in less than 20 kg, 62.5 milligram OD, 21 to 40 kg, 125 milligram 1 OD, and more than 40 kilograms, as you know, is the adult dose, 250 milligrams. Second line could be a fluconazole, which comes by the name of Fonaz, and the dose is 8 milligrams per kg per day. Again, I would mention that you may have to give pulse therapy of terbinafine, or you may have to give fluconazole if the patient doesn't respond. I hope I am audible. जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है. Okay. So the next category is onychomycosis, which is the fungal infection of the nails. The nails are pretty much brittle. They tend to get broken, and the patients usually come with the cosmetic complaints, like the nails are not looking very shiny to start with, and later on they are broken easily, they are discolored, they are thickened, and gradually they tend to involve the other nails as well. इसमें एक बड़ी important clinical बात मैं आपको ये बता दूं, which is more of a टोटका like, that if a patient comes with fungal nail infection and you see one nail infected, do tell the patient to have separate nail cutters for the infected nail and a separate nail cutter for the nails that are not infected. Once the patient tends to cut normal nails with the infected nail cutter, tinea may spread in the other nails. So it is very good totka to practice in clinic. Again, the treatment is terbinafine, and now in the fungal nail infection, you have two options. Either you can give a daily dose of terbinafine along with a Terbidum solution to be applied onto the nails and under surface of nails and on the sides. And the second option would be to give a pulse therapy of either terbinafine or fluconazole or itraconazole. The treatment doses would differ. So to start with, you may give terbinafine, because terbinafine is a pregnancy category B, and it could be given in the third trimester also. And it is well tolerated, very low spectrum of side effects. मेरी स्लाइड्स आगे मूव नहीं कर रही हैं अनम. Hello. Okay. So next is the tinea incognito. By incognito, we mean that something is treated badly with something which was not required as a treatment. So steroids, when applied onto fungus, they lead to flare of the fungus. Maybe starting with a temporary relief, the fungus tends to get flared up later on, and the characteristic clinical features are not seen.
For example, just when I told you in the start of the presentation that the characteristic clinical features could be the very well-defined margin and the central scaling. These are usually not seen in case of tinea incognito. But then again, how do you decide it is tinea incognito? It could be something else. Then there comes the part of history. Like you start asking the patient, how did it start? ये शुरू कैसे हुआ, क्या शुरू में ऐसा था वैसा था, and when then the patient tend to tell you कि उन्होंने इसके ऊपर बेटनोवेट, डर्मोवेट या फॉर दैट मैटर कोई भी स्टीरॉयड लगाया था और उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप चेंज हो गई एंड इट डिड नॉट रिस्पॉन्ड लेटर. तो टीनिया इनकॉग्निटो क्यों इतना कॉमन हमें नजर आता है? बिकॉज पेशेंट्स आर इन द हैबिट ऑफ अप्लाइंग स्टीरॉयड्स एंड दे आर इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू नॉन डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, वो उनको ट्रीट करते हैं. इसकी भी फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो टर्बिनाफिन ही होगी, बट अगेन मे बी यू हैव टू गिव फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ टर्बिनाफिन क्योंकि इट टेंड्स टू रिलैप्स वेरी कॉमनली. तो इसमें आपको पल्स डोजेस देना होंगे या टर्बिनाफिन डेली डोज पे थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देनी होगी. इन द स्टार्ट यू मे हैव द अम्ब्रेला ऑफ अ स्टीरॉयड बिकॉज पेशेंट इज इन द हैबिट ऑफ अप्लाइंग स्टीरॉयड्स एंड स्ट्रेट अवे उसकी हैबिट ब्रेक करने से टीनिया बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी टीनिया की तरफ जा सकता है. सो इन द स्टार्ट फ्यू डेज मे बी ऑन एन ऑल्टरनेट डे बेसिस you may give an antifungal in combination with the steroid, but later on maybe after 7 to 10 days you need to give plain antifungals, topical as well as oral. This is the dosage chart of tinea of turbidum, and on the weight basis I have already told you about it. Just remember one thing, on the weight basis it is roughly 6 mg per kg per day, and in the pediatric age group for less than 20 kg 62.5, 20 to 40 125 milligrams, and more than 40 is the adult dose. So let's come to the sibling of tinea, which is very commonly misdiagnosed. This is candida, seen in the inframammary, in the interdigital space, and also in the napkin area. अच्छा, अब मैं ये सारा रीड आउट करने की बजाय आई वुड लाइक टू टेल यू वन डिस्क्रिमिनेटरी फीचर ऑफ कैंडिडा ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन रेडिली डायग्नोज. ये क्या होता है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से सुनिए. कैंडिडा जब भी पेशेंट में प्रेजेंट करता है तो यू नीड टू लुक फॉर द सैटेलाइट लीजन्स. By satellite lesions, I mean that there is a clinically infected area which could be in any shape. It is red, erythematous, inflammatory, maybe scaly. But outside the area of infected lesion, you find certain dots or isolated lesions, discrete lesions that are spreaded around the lesion. These are called satellite lesions. These are a diagnostic thing to see in candida. और अगर ये आपको नजर आ जाए तो आपको बहुत खुश होना चाहिए because you are going to treat the patient on the lines of anti-candidal therapy. कैंडिडा का इंटरट्राइगो बहुत कॉमन है, किसी भी बॉडी फोल्ड्स एरिया में ये इंटरट्राइगो कर सकता है. इन द सेंट्रल पिक्चर यू सी द क्लिनिकल पिक्चर इज मोर लाइक टीनिया, but it is candida. Why? Because there is no clear cut scaling in the center. The periphery of the lesions are a little vesiculated, although we do not find any satellite lesions here, but this seems like a partially treated case. In the interdigital space, it looks like candida, erythrasma, tinea, could be anything, but then again on the clinical suspicion, you tend to treat it as intertrigo first, and then when the patient doesn't respond, do keep in mind candida. So Konaz cream, which is containing ketoconazole, is a very good treatment to start with. आप इसको apply करवा के you may find it very useful, and if you need to give an oral treatment, you may give. Coming on to Candida paronychia. Paronychia is a fungal fingernail infection. It could be pyogenic, it could be candidal. By pyogenic, I mean that the bacteria are there in the nail folds. And by candidal, I mean that there is candida in the nail folds. How do you know it is pyogenic infection by bacteria or candida? It is very simple. If the nail fold is infecting the nail as well, mostly it is candida. And if in this picture, which there is involvement of the nail folds, but not the nail so much, so it is not a very good clinical picture to show you candidal paronychia, I admit, sorry for that. But if in addition to the nail fold infection, you see discoloration or infection extending into the nail, it is purely a candidal paronychia. So you need to treat both. Sometimes they are, the pyogenic infection is present in addition to the candidal infection. So in those cases, you need to treat both of them.
It may cause extensive cutaneous infection. Candida extensive cutaneous infections are usually seen in patients who are diabetic or who are immunocompromised. The diaper rash is, again, you may find a diaper rash that is complicated by Candida. Commonly we see diaper rash which is due to irritation by the feces or the long, if the diapers are there for the longer duration, but it could be candidal. The signs are again satellite lesions, infection not responding to the topical treatments, and then you start with treatment of antifungals. The topical antifungals, I would suggest you do not start with the combined antifungal steroid preparations, but you should start with the plain antifungals. And if the patient does not respond, you may give 4 to 5 or 7 days of combined antifungal steroid preparation. And when there is florid candida involving the napkin area, sometimes you need to give oral antifungals, which is syrup Fonaz. It contains fluconazole, and it is very good for candidal infections, even tinea infections in the baby. I would like to give one more important clinical point here, that you can treat tinea either with terbinafine or with azole antifungals, that is fluconazole or itraconazole. But you cannot treat candida with terbinafine. This is very important point. You should keep it in mind कि आप कैंडिडा को टर्बिनाफिन से ट्रीट नहीं कर सकते, अलबत्ता आप टीनिया को दोनों दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, टर्बिनाफिन एंड itraconazole and fluconazole. So this is all from my side. Thank you very much. I hope I cleared many of the concepts regarding tinea and candida. And if there are any questions, I would like you to ask me and I'll be happy to answer. अगर पार्टिसिपेंट्स में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं. डॉक्टर साहिबा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है चैट बॉक्स में. डॉक्टर हिना कुरैशी पूछती हैं, कैन टॉपिकल टर्बिनाफिन प्रिस्क्राइब टू 2 to 3 years children? Topical terbinafine. जी. Yes, you can prescribe topical terbinafine. Topical terbinafine में कोई harm नहीं है. You may prescribe to even the newborns. उसमें कोई ऐसी बात नहीं. Regarding the oral treatments, we have to be careful. उसमें हम pediatric age group में oral terbinafine नहीं देते. We tend to give them after 4 to 5 years of age. But topical terbinafine can be given. डॉक्टर साहब, I hope I answered. थैंक यू सो मच. जब तक हमारे पार्टिसिपेंट सवालात करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कॉमनली गायनोकोलॉजिस्ट के क्वेश्चंस होते हैं कि LFTs का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सिस्टेमिक एंटीफंगल थेरेपी में. अगर कोई पेशेंट डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन के साथ आता है और उनके LFTs डीरेंज्ड हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा किया कि आपने ये पूछ लिया. इस फोरम पे आंसर करके मुझे खुशी होगी. इसमें आपको ये देखना है कि लिवर फंक्शन टेस्ट किस हद तक डिरेंज्ड है. इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम होगा SGPT. तो SGPT अगर आपका 2 times deranged है then normal value usually is between 25 to 45. Different labs की different normal values होती हैं. But if it is twice as normal, तो फिर आपको एंटीफंगल ट्रीटमेंट को 50% डोज पे देना होगा. अगर बहुत फ्लरिड फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया बहुत वाइड स्प्रेड है और आप रिस्क नहीं ले सकते स्टॉप करने का एंटीफंगल्स को, तो यू मे गिव एट अ 50% डोज. लेकिन अगर लिवर फंक्शन टेस्ट आर डिरेंज्ड मोर देन ट्वाइस नॉर्मल, तो इट इज बेटर टू स्टॉप द ट्रीटमेंट देयर एंड देन, and you should rely on the topical treatments. In this case, अब topical treatments को आप stop मत करवाइए जब तक के patient के liver function test वापस normalize नहीं हो जाते, because terbinafine के अलावा जो दूसरे antifungals हैं उनका भी side effect liver के ऊपर ही ज़्यादातर देखने में मिलता है. So ऐसा कोई antifungal नहीं है कि जो liver को ना छेड़े. So it's better कि अगर more than twice deranged हो गए हैं तो stop the antifungal treatment, oral antifungal treatment, and you should rely on the topical antifungals.
हम लोग इस वक्त आई थिंक मेरे कुलीग डॉक्टर्स जो हैं they are having me live on the Facebook as well, but because of some problem we could not share the screen. I'm sorry for that, my dear fellows, डॉक्टर but we'll साहबा, share the video. जी बिल्कुल, आपका रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास मौजूद है, हम बिल्कुल इसे शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जी उन तक भी बिल्कुल, I'll इंफॉर्मेशन be पहुंच happy. जाएगी, उन तक भी जी इंफॉर्मेशन जी पहुंच जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब वैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ये डिफाइन किया है कि प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में फॉल करती है टर्बिनफिन, फिर भी अक्सर जी। गायनोकोलॉजिस्ट के ये कंसर्न्स होते हैं कि हम टॉपिकल और सिस्टेमिक दोनों फॉर्म्स में टर्बिनफिन को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, या फिर वो किस ट्राइमेस्टर में हम अलाउड हैं उसको प्रिस्क्राइब करने के? मुझे लगता है सारे अच्छे अच्छे सवाल आप पूछ रही हैं, ये डॉक्टर्स नहीं पूछ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन अगेन आपका बहुत ही वैलिड है, और ये वो क्वेश्चन है कि जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेफर होके आती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली टेंड नॉट टू ट्रीट देम विद ओरल एंटीफंगल्स. अब इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी कैटेगरी बी का मतलब ये है कि आप दे सकते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. रिस्क ऑफ गिविंग द ट्रीटमेंट जो हैं अगर वो आउटवे नहीं करते देन द बेनिफिट्स यू मे गिव, तो हम दे सकते हैं. एंड आई यूजुअली गिव, मेरी प्रैक्टिस में ओरल एंटीफंगल्स टू प्रेग्नेंट फीमेल्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और इन द थर्ड ट्राइमेस्टर रूटीन में दिए जाते हैं. आई डू गिव. हाँ, अलबत्ता फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल के बारे में है कि वो नहीं देने चाहिए आपको प्रेगनेंसी में, बट टर्बिनाफिन यू मे गिव, और आपको देना पड़ता है. यू कैन नॉट कीप अ प्रेग्नेंट फीमेल इन्फेक्टेड टिल द डिलीवरी. She would be a risk to the baby, she would be a risk to rest of the family members, and it is going to disturb her psychologically very much if she keeps on itching herself and there are many and many lesions coming on everyday basis. So you should treat it. Hello, Assalamu alaikum, Dr. Aisha. My question is that vaginal candidiasis is very common, especially in pregnancy. So how to treat that? Okay. Good question. Vaginal candidiasis is very common in pregnancy. As you know, कैंडिडा जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि ये एजोल एंटीफंगल्स के साथ ट्रीट होता है, टर्बिनाफिन के साथ ये ट्रीट नहीं होता. सो आपको ओरल एंटीफंगल में इट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल देना पड़ता है, बट इन प्रेगनेंसी वी डू नॉट गिव लॉन्गर ड्यूरेशंस और डोजेस ऑफ इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल. टॉकिंग ऑफ द स्टैट डोजेस, उसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं कि आप स्टैट डोज फ्लूकोनाजोल की दे सकते हैं इन प्रेगनेंसी इफ द पेशेंट कम्स विद विजाइनल कैंडिडाइसिस. और टॉपिकल जो एंटीफंगल्स हैं वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि विजाइनल ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडा जो टॉपिकल्स के साथ दिया जाता है उसको तो ऑब्वियसली आप दें, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दें, बट यू मे ऑल्सो गिव अ स्टैट डोज ऑफ फ्लूकोनाजोल. हाँ, you cannot give and you should not give a couple of weeks treatment with antifungals जो कि normally हम recalcitrant tinea को देते हैं of fluconazole और itraconazole, but you may give a stat dose. अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगी जी, although ये आपने पूछा नहीं है बट मेरे ये दिमाग में था कि आई वुड टेल यू पीपल कि रिकैल्सिट्रेंट टीनिया, जैसे शुरू की कुछ स्लाइड्स में हमने बोला था कि रिकैल्सिट्रेंट टीनिया जो है उसको हम देखेंगे. तो रिकैल्सिट्रेंट वो टीनिया है, आजकल बहुत कॉमन है और दुनिया इसके ऊपर बहुत काम कर रही है. स्पेशली इन इंडिया देयर आर रिसर्च पेपर्स कमिंग एवरी अदर डे ऑन रिकैल्सिट्रेंट टीनिया ट्रीटमेंट. और उसमें जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो ये है कि मेरी प्रैक्टिस में भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत रिकैल्सिट्रेंट हैं. मतलब आई रिमेंबर गिविंग देम 3 to 4 courses of antifungal treatment and alternating with fluconazole and itraconazole, and still the patient doesn't respond, or patient comes back after every month or couple of months again with the same tinea type lesions. So उस केस में हमने क्या करना है कि उसमें लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अगर आप साथ में ओरल रेटिनॉइड दे देते हैं if there is no contraindication, but then again it comes into the domain of a dermatologist कि वो आइडेंटिफाई करे, असेस करे पेशेंट को कि उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन रेटिनॉइड की है या नहीं है. फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर रिकैल्सिट्रेंट टीनिया है तो आपको कुछ बातें उनसे पूछनी है.
वो ये पूछनी है कि कहीं पे घर में री इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा. The patient is being treated well by you, but the patient is getting infection at home. किसी ना किसी को घर में अगर सिंगल लीजन टीनिया भी है तो पेशेंट को बार बार लग सकता है. Secondly, you need to get their labs done for any immunocompromised status, diabetes, or any other condition that might put them at higher risk of acquiring टीनिया. थर्डली, उनको पर्सनल हाइजीन का आप बार बार देखें. समटाइम्स मैंने ये देखा है कि बाय सिंपल काउंसलिंग हम बहुत ज्यादा रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं री इन्फेक्शन का और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन का. उसमें वॉशरूम केयर है, फर्नीचर केयर है, फ्लोर्स की केयर है, अंडर गारमेंट्स की केयर है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बातें हैं. ये सारी चीजें अगर पेशेंट को हम क्लियर कर देते हैं एंड वी ऑल्सो काउंसिल देम रिगार्डिंग यूज ऑफ टॉयलेट पेपर्स इन वॉशरूम, तो उससे काफी हद तक ये रिड्यूस हो जाता है. बिकॉज जहाँ पे भी डैम्प एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो अगर वो ड्राई रखेंगे अपने आप को तो फिर चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं. डॉक्टर साहबा, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, टीनिया वर्सिकुलर का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं डॉक्टर जुल्फकार. जी जी. तो ओके, टीनिया वर्सिकुलर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीनिया जो कि कैसा नजर आता है. अगर मैं मुझे इतना टेक्निकल काम तो नहीं आते, लेकिन मैं देखती हूँ अगर मैं गूगल कर पाई तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा नजर आता है. पर डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियसली उन्हें पता ही होगा कि कैसा नजर आता है. तो टीनिया वर्सिकुलर का ट्रीटमेंट जो है ना वो टाइम पे करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इट टेंड्स टू स्प्रेड डाउनवर्ड्स ऑन द ट्रंक, इट टेंड्स टू स्प्रेड डाउनवर्ड्स ऑन टू द आर्म्स, और ये फेस की तरफ भी चला जाता है. यूजुअली सेवरिक एरियाज को इन्वॉल्व करता है बट ये स्प्रेड हो सकता है. तो इसके ट्रीटमेंट में हमें टॉपिकल क्या देना है. टॉपिकल इसमें टर्बिनाफिन इतना ज्यादा काम नहीं करती. टॉपिकल टर्बिनाफिन बहुत सारे लोग इसमें देते हैं, लेकिन टेक्स्ट हमारी डर्मेटोलॉजी की टेक्स्ट ये कहती है कि टर्बिनाफिन ज्यादा काम नहीं करती. और मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़ा देख लिया, ऑल्दो मैंने इतना ज्यादा आई डोंट गिव क्योंकि मुझे पहले से नॉलेज है कि ये काम नहीं करती, लेकिन मैंने एनेक्डोटली देखा कि पीपल हु आर ट्रीटिंग टीनिया वर्सिकुलर विद टर्बिनाफिन टॉपिकल उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है एंड द पेशेंट कम्स विद द सेम प्रॉब्लम. तो आपको टॉपिकल एंटीफंगल्स जो हैं वो एजोल एंटीफंगल्स देने हैं, मे बी कीटोकोनाजोल जो है ना, टॉपिकल बायफोनाजोल, इस तरह के आपको टॉपिकल्स देने हैं. और अगर इन्फ्लेमेटरी है तो मे बी इन द कॉम्बिनेशन विद स्टीरॉइड जैसे आप दे सकते हैं, टॉपिकल कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स वो भी आप दे सकते हैं. इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप ओरल नहीं देते आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा. वो कुछ दिन के लिए ठीक होगा, वो फिर आपके पास वापस आएगा. सो आपको अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आपको पेशेंट को ओरल ट्रीटमेंट देना है. हम शुरू में कीटोकोनाजोल के साथ ओरली ट्रीट किया करते थे, लेकिन सिंस ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ इयर्स कीटोकोनाजोल ओरल इज नॉट अवेलेबल. तो फिर हम आजकल जो ट्रीटमेंट है वी टेंड टू ट्रीट द पेशेंट बाय इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल. एंड इट्राकोनाजोल का 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 14 days और फॉर 10 days इज अ गुड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन. इसके साथ 90 to 95% पेशेंट रिस्पॉन्ड. Thank you so much, Dr. Sahiba, for your insightful presentation. We will be in coordination for your expert advice in future also. And participants, I'm hopeful that now you all are clear on common fungal infections and the treatment. Thank you for your participation. Thank you everyone, and Allah Hafiz. In the end, I would like to thank you for good coordination. और मुझे बड़ा थोड़ा सा fear था कि पता नहीं ये सही coordinate हो पाएगा कि नहीं, but you did it very well. And also for the participant who saw me and they joined me at Facebook Live, and although on YouTube we could not share it, but we would be sharing, as you said कि you are recording it whole and you will be giving. There is a YouTube channel which I am running. It is by Skincare by Dr. Aisha Gyas, and you may find the video over there as well. And I am also putting some related stuff on the channel, so it would be good for you all if you tend to watch that stuff. Thank you again, ATCO. Thank you everyone for listening patiently. And if there are any other questions, I would be more happy. I would be happier to answer maybe by some other media or later on. You can get in touch, और आप मेरे contact numbers या how to approach आप अनम से ले सकते हैं, ATCO से ले सकते हैं, and उसमें कभी भी आपको कोई resistance नहीं आएगी. पार्टिसिपेंट्स की इस सेशन के बाद तो काफ़ी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड. मज़ीद अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई क्वेरी आती है, कोई ऐसा केस आता है जो आप हमसे शेयर करना चाहें
एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें तो आप डॉक्टर आयशा को भी अप्रोच कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें हमारी टीम तक पहुंचा सकते हैं। I hope you're going to benefit from this video, and till next video, Allah Hafiz.